हाय गाइस, रिसेंटली एशले टेलिस एक इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि इट वाज द बैड बेट ऑन इंडिया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब पिछले 20 सालों में 2 डिकेड्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट किया है दैट वाज नॉट हेल्पिंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द बैकग्राउंड ऑफ ताइवान क्राइसिस एंड द यूक्रेन क्राइसिस। इन दोनों क्राइसिस में इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साथ नहीं दिया है। So, given the statement and given the scenario, we will analyze the situation of India, United States of America and China. अब इस पूरे सिनेरियो में we need to understand how United States of America looks at India from their foreign policy perspective. Given the fact that India is the second largest military and 5th largest economy in the world, India is very much strategically important for the perspective of United States of America. And given the one fact, this century belongs to the Asia, very specifically Indo-Pacific region. अब जब Indo-Pacific region and Asia की हम बात करते हैं, there are 2 important powers. One is India and second is China. And China's growing influence in the Indian Ocean region itself gives the very important perspective to the United States of America's foreign policy. क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहता है इन द क्रिएटिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द न्यू मैरीटाइम ऑर्डर, और ये जो न्यू मैरीटाइम ऑर्डर है वो बेस्ड ऑन द इंडियन ओशन इटसेल्फ एंड स्पेसिफिकली ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आ जाते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड चाइना, जिसमें चाइना इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू द अदर कंट्रीज, एंड दैट्स व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग रिलेशंस विद द इंडिया. In the case of Taiwan crisis, India didn't support the United States of America stand, but neither they accepted or rather they kept the silence over the one China policy. In the case of Ukraine issue, also they didn't want to alienate the Russia because we are heavily dependent on the military side or military equipment perspective and energy resources perspective on the Russia itself, and that's why we didn't support the sanctions over the Russia. And that actually aggravated the United States of America. So ये सारे ताइवान क्राइसिस एंड यूक्रेन क्राइसिस के मद्देनजर रखते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिया चाइना रिलेशंस एज वेल. इंडिया चाइना रिलेशन 1962 से बिटर होते गए हैं एंड 1962 तक 1980 तक, मतलब ये जो पूरा पीरियड है यहाँ पे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे. मतलब 1980s के बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर होना शुरू हो गए, दैट इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसको हम CBM भी बोलते हैं. तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैज बीन इनिशिएटेड आफ्टर 1980s, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली 18 years. बट स्टिल देयर आर सम प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द बॉर्डर इशू. अब इंडिया के और यूनाइटेड, मतलब यहाँ पे हमारा कॉमन एनिमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, इन दोनों का जो कॉमन एनिमी है वो चाइना है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटीज अलग है और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. What does that mean? Priorities means, for example, for India, the attack and the Chinese movement in the Himalayan region, that is for example Arunachal Pradesh, for example Ladakh, यहाँ पे जो मूवमेंट्स होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर्ड टू द ताइवान. लेकिन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताइवान इश्यू इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर्ड टू द अरुणाचल एंड लद्दाख रीजन. And these priorities are setting apart the stand made by these 2 countries, though their enemy is common, that is the China. Indian-China relation has become worse after specifically in 2020 Chinese incursions and heavy deadly incursions. And after 2020, we have increased our association with the United States of America. But given the priorities differences, given the overall differences with respect to the Ukraine, Russia and Myanmar, both countries, that is United States of America and India, both knew that they need to cooperate with each other to counterbalance China's growing influence in the Indian Ocean region. And to understand the China's growing influence in the Indian Ocean region, we need to understand its EEZ, exclusive economic zone. And for that matter, China is claiming different islands so that they can increase their EEZ, exclusive economic zone, which is 200 nautical miles from the coast.
and from that perspective they are trying to claim different territories and respective exclusive economic zone in the Indian Ocean region, so that they can create the bases in the Indian Ocean. And when you are creating the bases at different location in Indian Ocean with strong naval presence, it will create a fear factor among the small countries and strong control over the international trade through the Indian Ocean, which is accounted the 80% of the ocean trade in the world. So in this scenario, given the formidable geographical advantage India has, and given the military superiority of United States of America has, we need to cooperation between United States of America and India to counterbalance China. For that matter, United States of America need to support India's efforts in building naval infrastructure, equipments in the Indian Ocean region. Along with that, training exercises will be conducted with Australia and Japan. और ऐसा नहीं है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो फॉर्मल अलाइज है, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, जापान है, दे हैड सपोर्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन ताइवान क्राइसिस. दे डिडंट सपोर्ट United States of America in Taiwan crisis as well. But still, all of these countries, Japan, Australia, India and United States of America, need to cooperate with each other, particularly in the military infrastructure and the training exercise to counter the Chinese growing influence. And when we create the network of Japan, Australia, India and United States of America, we can control the Indian Ocean from the Strait of Malacca to the Coco Island on the northern coast of Australia itself. तो अगर ये पूरा स्ट्रेच हम कंट्रोल कर लेते हैं, that will indirectly control or shape the Beijing's foreign policy decision without actually getting into the conflict over the Taiwan or any other issue by the China. So given the context of China is recreating the maritime order, new maritime order based on the different strategic locations, creating naval bases, naval infrastructure and the naval strong presence in the Indian Ocean region, United States of America needs India to counterbalance China, and for that matter Australia and Japan as well. So this is all about the overview of the scenario. We will get into the deeper details of this situation in the next coming videos. Thank you very much.